Hello, children. Some days back, I had posted this assignment on WhatsApp. So I will just explain you this question. Some of the body parts are single and some are more than one. आप समझ रहे हो ना? कुछ बॉडी पार्ट्स हमारे सिंगल है, यानी वो सिर्फ वन है, ओके? और कुछ बॉडी पार्ट्स मोर देन वन है. यस, वन से ज़्यादा, वो टू हो सकते हैं या टू से ज़्यादा, बहुत सारे, ओके? वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी पार्ट्स, ओके? इफ़ द बॉडी पार्ट इज़ वन, राइट इन द वन कॉलम. अगर वो सिर्फ वन बॉडी पार्ट है, यस, वन में आता है, तो वन के कॉलम में लिखना है आपको. एंड इफ इट इज़ मोर देन वन, राइट इन मैनी कॉलम. ओके, तो अब हम ये असाइनमेंट करते हैं. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था नेक. नेक एक ही होता है ना, गर्दन जो का हिस्सा है वो एक ही है. सो आई रोट इन वन. यस, एंड मोर देन वन होगा तो जैसे हमने फीट ले लिया. यस, वी हैव 2 फीट. नो, अब फीट की स्पेलिंग क्या होती है? FEET, फीट. हमारे पास 2 पैर है, 2 फीट, तो हमने 2 फीट को मैनी में लिखा है. ओके, ऐसे आपको सारे बॉडी पार्ट्स जो वन में है वो वन में लिखेंगे और जो मैनी है वो मैनी में लिखेंगे. चलो तो फिर साथ में मिलकर करते हैं, और जहाँ पे भी आपकी गलती हुई है उसको आप रेक्टिफाई करोगे, ठीक है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बॉडी पार्ट, हेड. हेड हमारा कितना है? वन है या मैनी है? एक ही हेड होता है, तो वी विल राइट इन वन कॉलम. तो हेड हम यहाँ लिखेंगे, head. Now let's go to the eyes. Eyes, we have 2 eyes, right? So eyes हम कहाँ लिखेंगे? many में. Okay, so EYE और S लगाएंगे because we have 2 eyes, तो S लगेगा. Okay, eyes के बाद हम nose पे आते हैं. Nose, how many nose you have? One only, right? One nose, NOSE, nose. Let's go to the ears. How many ears do we have? 2 ears, so we will write ears in many column. S लगाना नहीं भूलना है. When you're writing in the many column, there should be S to the name. Sometimes there is no S, like let's see this name feet. Yes, 2 feet. There is no S, but here the spelling is double ear. FEET, feet. So there are exceptions. Okay. So now let's go to the next one. Next body part. We wrote head, we wrote eyes, we wrote nose, ears. Now let's come to the mouth. Yes, mouth. कितने माउथ है हमारे पास? वन ओनली माउथ. सो लेट्स राइट माउथ इन वन कॉलम. एंड माउथ के बाद और कौन सा बॉडी पार्ट आप बोलोगे? लेट्स टेक द टंग. जीभ कितनी है हमारे पास? एक ही जीभ है, ओनली वन टंग. सो वी विल राइट इन वन कॉलम, TONGUE, टंग. ओके, लेट्स गो टू द टीथ. दांत तो बहुत सारे होते हैं, राइट? Many teeth we have, so let's write teeth in many column. Okay, now teeth spelling here, you do not have to write teeths, no S. Okay, yes, TEETH, teeth. यहाँ पे देख रहा है आपको डबल लिया है, वैसे फीट में भी डबल लिया है. ओके, सो व्हेन वी राइट many teeth, it becomes TEETH. teeth is the spelling. Okay, टंग के बाद हम जाते हैं नेक्स्ट बॉडी पार्ट. what you can take is lips. Lips, we have 2 lips, so let's write lips in many column. Okay, now neck, I already told you, one neck. Yes, let's go to the hands. How many hands you have? 2 hands, so where we will write one or many? Many. Hands यहाँ पे लिखेंगे आप. Don't forget to write S. Some children I have seen, they have just written hand, S is missing, then it is wrong, please. So write hands, 2 hands. Fingers भी बहुत सारे हैं हमारे. How many fingers do we have? 10 fingers. तो fingers आएगा many column में. Okay, after fingers, let's go to the legs. One leg or many legs? Of course we have 2 legs, so we will write legs in many column. Okay, उसके बाद हम आएंगे, हमारे पास एक हार्ट भी है, राइट? यू नो, वी हैव वन हार्ट. यस, जो धक 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 करता रहता है हमेशा, right? So heart is only one, so we will write in one column. और stomach, हमारे पास कितने stomach होते हैं? एक ही stomach है, so we will write stomach. It's also called as belly, so we will write BELLY, belly. Okay, next what else we can write? Children, we have cheeks also, right? How many cheeks do we have? 1 or 2 cheeks? Yes, we have 2 cheeks. So cheeks we will write in many column. CH
double E K, and we have to put S. Cheeks, 2 cheeks. And we also have a chin, right? How many? 1. We have only one chin, so chin we will write in 1 column. What else can we write? We have shoulders also, right? How many shoulders we have? 1 or 2 shoulders? Yes, we have 2 shoulders. So shoulders we will write in many column. Shoulders. Shoulders. Don't forget to put an S, okay? And our body is made up of bones, right? Many bones we have. बहुत सारे bones होते हैं ना हमारे body में. So bones we will write in many column. BONES, bones. Got it, children? See, so many body parts we got in one and many. Yes. One neck, one head, one nose, one mouth, one tongue, one heart, one belly, and one chin. Okay. Similarly, in many we have many feet, many eyes. We can also write toes over here. Yes. What we have on our feet? We have toes. How many toes do we have? 10 toes, right? So we can write toes also here. TOES, toes. Okay. TOES, toes. 10 toes. 10 fingers and 10 toes. 2 eyes, 2 ears, many teeth, 2 lips, 2 hands, 10 fingers, legs, 2 legs, 2 cheeks, 2 shoulders, and many bones in our body. Okay, so this is all about one and many. I hope the concept is clear. Wherever you have made mistakes, children, please do the correction. Okay, thank you so much. Bye.